टा क्वेश्चन एथरो ही आसुची ओके तो प्रेसिडेंट उपरे तीनटा क्वेश्चन नॉन बेसिक एंड फैक्चुअल क्वेश्चन हमर पडितला 2014 रे गोटे क्वेश्चन पडितला कौन हबार हां सर 2014 रे जो क्वेश्चन पडितला President shall make rules for more convenient transaction of the business of the government of India and for allocating among the minister of said business all the executive action of the government of India shall taken in the name of Prime Minister. कौन हबार इना? हाँ? Only one have a correct answer. Okay. So President shall make the rules for more convenient transaction of the business of the government of India and for allocating the minister of said business all the executive action of the government of India shall taken in the name of kaharo president not prime minister mane rakhiba all the executive action taken in the name of president not prime minister एटी जो prime minister लिखा है एटा wrong एटा हबो कोन president ए दीटा जाक जो हमें कहूचे एटा को पावर रे हमर आसुची president करा executive power है all the executive action taken in the name of president हमर अपॉइंटमेंट दियंती प्राइम मिनिस्टर को अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सीएजी को अपॉइंटमेंट दियंती अटॉर्नी जनरल को अपॉइंटमेंट दियंती सब स्टेट रो गवर्नर मान को अपॉइंटमेंट दियंती तो हमर आंसर कोन हबो ओनली वन हिजबो करेक्ट आंसर ओके सेकंड क्वेश्चन 2012 रे क्वेश्चन पडितला according to the constitution of India it is the duty of the president of India to cause to be laid before parliament which one of the following तो को रिपोर्ट गुडा का प्रेसिडेंट पार्लियामेंट रे रखंती डिस्कशन और डिबेट 134 ऑप्शन सी 134 करेक्ट आंसर होची 134 देखो फाइनेंस कमिशन ये प्रति 5 वर्ष रे जो गठन करंती आ फाइनेंस कमिशन जो रिपोर्ट ता दबो काहा को दबो प्रेसिडेंट को दबो प्रेसिडेंट सेटा हमरा पार्लियामेंट रे रखबे डिस्कशन डिबेट पई सीएजी गोटे रिपोर्ट दबो सीएजी जो रिपोर्ट ता दबो सेटा भी पार्लियामेंट रे रखबे डिस्कशन डिबेट पई नेशनल कमिशन फॉर एससी नेशनल कमिशन फॉर एसटी तेनु मने रखो प्रेसिडेंट जो कमिटी गुडा को अपॉइंटमेंट दियंती जार चेयरमैन को तांकू हमरो से रिपोर्ट गुडा से माने काहा को देबे प्रेसिडेंट को देबे सो काहा को अपॉइंटमेंट दियंती हमरो फाइनेंस कमिशन मेंबर चेयरमैन यूपीएससी रो मेंबर चेयरमैन सीएजी तांको अपॉइंटमेंट दियंती देन हमरो नेशनल कमिशन फॉर एससी एसटी ओबीसी तो एमाने जो रिपोर्ट ता देबे हमर काहा को देबे प्रेसिडेंट को देबे प्रेसिडेंट एटा कोडी रखिबे ना पार्लियामेंट रे रखिबे डिस्कशन एंड डिबेट पे सो हमरो एई जो रिपोर्ट ता कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कर जो सीएजी कहूचे ए रिपोर्ट ता से काहा को देबे प्रेसिडेंट को देबे प्रेसिडेंट कोडी रखिबे पार्लियामेंट रे रखिबे ओके पार्लियामेंट रो एटा कोडी की जीवो पार्लियामेंट रो एटा जीवो माने रखि था पब्लिक अकाउंट कमिटी पीएससी जो हमें कहूचे पब्लिक अकाउंट कमिटी एटा एग्जामिन करके पढ़ी कि ता फाइंडिंग्स गुडा को पार्लियामेंट को जण तापरे पार्लियामेंट रे डिस्कशन डिबेट सो को रिपोर्ट गुडा का हमर दियंती एटा दियंती ए रिपोर्ट तो कोन हबा आंसर हमरो 134 हिजबो करेक्ट आंसर बुझी पाला ना बुझ पालानी यार किसी डाउट अछि सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गोटे हमर प्रेसिडेंट ऊपर पडितला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमिशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट किए हमर फाइनेंस कमिशन जो रिपोर्ट ता दबो से रिपोर्ट ता किए हमर पार्लियामेंट रे रखिबे डिस्कशन और डिबेट तो किए प्रेसिडेंट ही रखिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट तेनु प्रेसिडेंट ही हमर रखिबे आंसर अब कोन ए इज द करेक्ट आंसर अच्छा फाइनेंस कमिशन कितना नंबर आर्टिकल 280 केते जन फाइनेंस कमिशन रे थांती 5 मेंबर बॉडी ओके जने चेयरमैन थांती आउ 4 जन हमर अदर मेंबर थांती जे चेयरमैन हेबे तांकर क्वालिफिकेशन कोन हेतिया दरकार से एक्सपर्ट इन कोच रे दिया दरकार पब्लिक पॉलिसी ओके मने रखिता ये पब्लिक पॉलिसी आ जो 4 जन रहिबे तांका भितरे जने हमर इकोनॉमिक्स थिबे इकोनॉमिस्ट आउ जने हमर कोन थिबे
हमर आउ के थिबे ना जने इकोनॉमिक्स थिबे जने हमर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऊपर हमर थिबे फाइनेंशियल और मैनेजमेंट ऊपर तो एमिति तो ए जो फाइनेंस कमीशन कौन एक्चुअली करे कौन हमर फाइनेंस कमीशन करे हम पढ़ी थिले लास्ट टाइम कौन करे टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट नेट टैक्स कलेक्शन हला सेही टैक्स रा केते परसेंट स्टेट को दिया दिबा केते परसेंट निजे पाखे रखिबे तो सेहीटा हमर रिकमेंडेशन ये दिन so it will give the recommendation about the net tax distribution between the center और state भितर ओके तो एटा माने रखिबो वेरी इंपोर्टेंट तो तीनटा क्वेश्चन हमर पडितला सो प्रेसिडेंट ऊपर जदी क्वेश्चन हमर पडुची वेरी इंपोर्टेंट कोन पढिबो प्रेसिडेंट चैप्टर रो हमें जदी देखिबा रिवाइज करिबा 5-10 मिनिट्स रे प्रेसिडेंट होउछन हमर इंडियन एग्जीक्यूटिव ओके रे रहउछंती एंड हेड ऑफ द स्टेट हमें जे होउछंती हमर कोन हेड ऑफ द स्टेट माने रखिबा प्रेसिडेंट होउछंती हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहले किए प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट कहले किए प्रेसिडेंट ओके ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ओके इंडिया रा फर्स्ट सिटीजन सिंबल ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी तांकर जो इलेक्शन हुए हमर केमिति हुए डायरेक्ट इलेक्शन हुए नि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए इनडायरेक्ट इलेक्शन रे हमें कहिबा केमिति हमर इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए ना गोटे इलेक्टोरल कॉलेज अछि इलेक्टोरल कॉलेज रे की रहिबे ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली माने रखिबे इलेक्टेड मेंबर नो नॉमिनेटेड मेंबर हमर एथिरे रहिबे नि तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट माने लोकसभा राज्यसभा रो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट माने जत्ते स्टेट रो विधानसभा रो इलेक्टेड मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली पांडिचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर ओके जम्मू एंड कश्मीर ना है एठी जम्मू एंड कश्मीर तो जोठी विधानसभा अछि तो आर केवल इलेक्टेड मेंबर माने रहिबे एटा माने रखिबो तापरे कोन तांगर क्वालिफिकेशन कोन थिबो इंडिया रा सिटीजन हेतिबे 35 वर्ष हेतिबे एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू ए मेंबर ऑफ लोकसभा ओके वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में भी सेम इंडिया रा सिटीजन 35 इयर्स बट ही शुड बी क्वालिफाइड टू ए मेंबर ऑफ राज्यसभा ओके दैट इज द ओनली डिफरेंस हमर रहला ओके कंडीशन हमें कोन कहले ही शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ए सब तो तुमने देखिलो ओके टर्म केते ना जनरली तांकर होची 5 वर्ष प्रेसिडेंट का इलेक्शन केते 5 इयर्स रहउची किंतु से यदि रिजाइन देबे रेजिग्नेशन लेटर काहा को देबे वाइस प्रेसिडेंट यदि रेजिग्नेशन देबे काहा को देबे प्रेसिडेंट हमर रेजिग्नेशन देले काहा को देबे वाइस प्रेसिडेंट को हमर देबे ओके एंड तांको तापरे ऑफिस रो हमर बाहर करा जाय परिबो प्रेसिडेंट को बाहर करिया कोले कोन कंडीशन वायोलेशन ऑफ जो प्रेसिडेंट को मन जो बाहर करा जाय माने रखा वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमर होची कंडीशन होची वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रो वायोलेशन हेले ही ताको बाहर करा बेकरे बाहर करिया कोले कोन करिया को पड़िबो ना एथिरे 1/4 ऑफ दैट हाउस जो हाउस हमर सपोज लोकसभा रे 1/4 राज्यसभा रे भी 1/4 14 डेज रा एडवांस नोटिस दिया दिबो ता परे टोटल मेंबर रो हमर केते ना मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एटा स्पेशल मेजॉरिटी नहीं प्रेसिडेंट करो जो बाहर करा जाए टोटल मेंबरशिप रो 2/3 हमर जो एटा हमर अप्रूवल हो जोटा की प्राय समस्त होती स्पेशल मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 मेंबर एटा ए केस रे न सबुठो प्रेसिडेंट को बाहर करिया कोले हाईएस्ट मेजॉरिटी दरकार टोटल स्ट्रेंथ रो 2/3 मेंबर हमर एटा माने रखिबो माने बहुत पिला कंफ्यूजन है कि भूल मार देती ओके ए जो पड़ी थिला देखो आईएएस रो प्रीलिम रे जो पड़ी थिला all the executive eta tanga executive power all the executive action of the government of India are formally taken in the name of president not prime minister a line ta padithila second line भी padithila okay third line jota he make rules for more convenient transaction of business of the union government and allocation of the said business among the minister तो पूरा line by line लक्ष्मीकांत रा पढिबो okay directly question से point टा उठेकने की करा ए पॉइंट टा पडितला एंड ए पॉइंट टा पडि ओके सो लाइन बाय लाइन लक्ष्मीकांत रा पढिया को पडिबो ही अपॉइंट द मिनिस्टर एंड अदर काउंसिल मिनिस्टर
अटॉर्नी जनरल को से अपॉइंटमेंट करंती अपॉइंट द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर मेंबर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी मेंबर चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमिशन मेंबर चेयरमैन ऑफ एससी एसटी ओबीसी ओके सब स्टेट रो गवर्नर समस्त को से अपॉइंटमेंट हमरा दियंती ओके he can appoint interstate council to promote interstate relationship ए सब गुडा हमरा ओके तांका लेजिस्लेटिव पावर रे भी बहुत गुडे अछि हमें पढिबा सो लेट्स डू द क्वेश्चन पर हमें ताको ओके सर गोटे डाउट थिला सर हां कुआ सर प्रेसिडेंट को रो इम्पीचमेंट क्वाजी जुडिशियल सेटा टी बुझी दियंतु केमती माने हाउ इज इट क्वाजी जुडिशियल क्वासी जुडिशियल माने तमरो जो चार्ज ता लगा जाई छी तो सेटा ता पुनी इन्वेस्टिगेशन हेई कि तापरे बोथ हाउस रे हमर 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस सेटा हमर करा जाउ छी ना तो तमे जो कहूछ कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेशन होउची तापरे बोथ हाउस रे डिस्कशन हेई कि तापरे तो वोटिंग पे दिया जलो ना गोटे टॉपिक ऊपर इन्वेस्टिगेशन होउची डिस्कशन होउची तापरे वोटिंग होउची माने जुडिशियल नोटा क्वासी जुडिशियल आधा आधी जुडिशियल प्रोसीजर रे हम जेमति होए से बोले ओके सो नेक्स्ट हमें देखिबा प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रा कोन तेनु प्रेसिडेंट चैप्टर रो लाइन बाय लाइन लक्ष्मीकांत रु पढि दो क्वेश्चन कोन पढिबो 23 टा क्वेश्चन पॉलिटी रे पढुची से ओपीएससी प्रीलिम हो तेनु भल से जेमति गोटे भी क्वेश्चन तमरा भूल हबो आ लाइन बाय लाइन पढि दबो आ तार भीतर ही क्वेश्चन हमरा आसीबो सो नेक्स्ट हमें प्राइम मिनिस्टर ऊपर यदि क्वेश्चन करबा 2015 रे ओटे क्वेश्चन पढितला कर तो कौन है आंसर both are incorrect. neither first है all the executive power of the Indian of India is vested with कहा जरा president हमें एबे पढ़िले all the executive action taken of the power taken in the name of president second prime minister is the ex officio chairman of the civil service board एटा भी भूल civil service board रो ex officio chairman किए Cabinet secretary. को secretary Cabinet secretary. कैबिनेट सेक्रेटरी माने रखिबा कैबिनेट सेक्रेटरी होचंदी हमरा किए ना एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड सो आंसर कोन नाइदर हबो एडी माने रखो कैबिनेट सेक्रेटरी हमर कोन ना कैबिनेट सेक्रेटरी लेखा जे देखो कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज आल्सो द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड ओके तो कैबिनेट सेक्रेटरी होचंती हमरा एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड तेणु मन रखि पॉइंट एंड कैबिनेट सेक्रेटरी कर कौन काम ना ही इज हेड ऑफ द सेक्रेटरी जेते हमर सेक्रेटरी अछंती हमें देखिबा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट आर द कैबिनेट सेक्रेटरी इज आल्सो द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड इन द गवर्नमेंट allocation of the business rules cabinet secretary find a place in the first schedule the rule the subject allocated to secretary रहउची ये कौन करिवे जो कैबिनेट मीटिंग होची तार पूरा प्लानिंग आउ ये सब करिवे सो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस टू कैबिनेट एंड कैबिनेट कमिटी रूल्स ऑफ बिजनेस ए सब डाटा हम करिवे ओके जो कैबिनेट सेक्रेटरी रहिले कौन से काम करंती ना कन्वीन द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट ऑन ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर यदि कहबे ना एबे कैबिनेट रा मीटिंग बसिबो से ही पूरा प्लानिंग करके शेड्यूल करंती ओके प्रिपरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ द एजेंडा कौन हमरा मीटिंग रे हबो सर्कुलेटिंग द पेपर रिलेटेड टू द केस ऑन एजेंडा प्रिपेयरिंग ए रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन टेकन सर्कुलेशन ऑफ द रिकॉर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ए सब गुडा हमरा किए करिवे ना कैबिनेट सेक्रेटरी तांकू हेल्प करते ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी एबे कर 2014 रे पडितला हां 1 and 2 3 टा allocation of financial resource करंती
पैसा से काहाको allocation करंतनी किंतु preparing the agenda for cabinet meeting yes, secretarial assistance to the cabinet committee yes, तो allocation of financial issues to minister मन को ये पैसा बांटती so answer कौन हबो 1 and 2 हिजबो हमरो correct answer बुझी पाला ना बुझी पाला नि next question One and three. हाँ 2 and 3. 2 and 3. हाँ Sir, 2 and 3. कौन कौन 2 and 3 1 2 3 के कौन Sir, one ta only Lok Sabha aba. Council Okay. Minister तो responsible. देखो councillor minister in the central shall be collected responsible to Only Lok Sabha Lok only. Sabha. very important तुम क्लास रे पढ़ेला बेले 10 थर रट्टा मारी की करी कहिछि सब बेले मन रखि था काउंसिलर मिनिस्टर रेस्पोंसिबल टू लोकसभा राज्य सभा रे तांकर यदि मेजॉरिटी न रहियो भी चलिबो किंतु लोकसभा रे द मोमेंट दे लॉस द मेजॉरिटी दे द गवर्नमेंट विल बी कोलैप्स सेति पई लोकसभा रे से माने रेस्पोंसिबल टू लोकसभा ओनली नॉट राज्य सभा त कोडी को लोकसभा रे तांकर मेजॉरिटी रहइबो नहले गवर्नमेंट भांगी जबो सो जो काउंसिलर मिनिस्टर इन द सेंट्रल शाल कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल टू लोकसभा ओनली नॉट पार्लियामेंट पार्लियामेंट नोहेडा कोडी लोकसभा ओनली रिमेंबर दिस पॉइंट आउ एटा 5 6 थर पडिछि ओके तनु कोठी बुली बुली के आसीबो काउंसिलर मिनिस्टर हो और द एग्जीक्यूटिव आर रेस्पोंसिबल द लेजिस्लेचर एमती आसीबो सो यूनियन मिनिस्टर शाल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ठीक अछि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट माने कोन एठी as long as they hold the majority in Lok Sabha they will be in the power the moment they lost the majority in Lok Sabha and government bhangi eta ठीक अछि prime minister shall communicate the president about the proposal of the legislation yes जहाँ भी लॉ आसुची जहाँ भी प्रपोजल आसुची सबु प्रेसिडेंट को किए कम्युनिकेट करंती ना हमर प्राइम मिनिस्टर ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ओके सो माने रखिबो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट 2012 क्वेश्चन दा पडितला वर कौन आंसर A. सो करेक्ट आंसर होची ए जो प्राइम मिनिस्टर जी हेबे एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट मे नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट तमे जणे लोकसभा किबा राज्यसभा रे मेंबर न हेई थिले बी प्राइम मिनिस्टर हेई परिबो किंतु कंडीशन होची 6 मास भितरे से कोई भी हाउस रो गोटे मेंबर हवा दरकार और एग्जांपल होची राजीव गांधी जेतले प्राइम मिनिस्टर हेले ही वाज नॉट ए मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा तांको मदन कर जो डेथ हेतला इंदिरा गांधी कर सी इमीडिएटली प्रथमे प्राइम मिनिस्टर हिसाब रे शपथ नेले तापरे तांको मदन कर रिचुअल्स कले आ पर से 6 मंथ पर हमरो मेंबर हे गले सो तमे जे कोनो सेटा केवल प्राइम मिनिस्टर कर नहे कोनोस भी मिनिस्टर तमे जदी किछि भी ना हो यू कैन बिकम ए मिनिस्टर इन द काउंसिल में देखिबा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमर थिले किए एबे अछन जे एस जयशंकर ताकर फास्ट टर्म में मने पकाओ तो सी जेतले मिनिस्टर हेले ही वाज नॉट ए मेंबर डायरेक्टली ओना गला तांको जो हमर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर करा गला ता पर से राज्यसभा को आसिला जे मेंबर हिसाब रे तेनु इवन इफ यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट तमे मिनिस्टर हेई परिबो प्रोवाइडेड विद इन 6 मंथ भितरे यू शुड बिकम ए मेंबर ऑफ one house of the parliament okay so eita hochi the prime minister of India at the time of his appointment need not necessarily be a member of one house of the parliament but must become a member of one house of the parliament within 6 months 6 मास भितरे से कोन करिवे गोटे हाउस रो मेंबर हबा निहाती दरकार बुझी पाला ना बुझी पालानी आउ गोटे क्वेश्चन नंबर प्राइम मिनिस्टर पढ़ीला 2009 रे पढ़ीला ई क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट दैट
the total minister including the prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the total member of the house of the people. 91. 91st amendment act केबे आस्थिला 2003. मने रखिबो 2003 रे आस्थिला तो गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रे टोटल केते मिनिस्टर रही परिबे मन इच्छा कोन 100 150 200 जा भी रही परिबे कि ना तो मैक्सिमम केते ना 15% ऑफ लोकसभा रो एक्सीड करिवे लोकसभा रा स्ट्रेंथ जेति की तार 15% रो एक्सीड करबनी इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने केते हम धर 543 कहबा हमर टोटल लोकसभा रे अछंती तार 10% हला 15.4 आर हला 15 तो पाखा पाखी हमर 82 जन माने मिनिस्टर मैक्सिमम रही परिबे कोठी ना सेंटर ताठुरु अधिक हमर रही परिबे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर तो एडा को अमेंडमेंट एक्ट रे आसीथिला ना 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने सिमिलर थिंग हमर स्टेट पई भी स्टेट रे एठी केवल खाली मु कहिबी जे which of the following constitutional amendment act state that the total member of minister including chief minister okay chief minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the total member of the house of the people it is house of the mane legislative council okay member of the state legislative council state legislative assembly तो कौन हबार सेम थिंग 91st सो 91st अमेंडमेंट एक्ट रे दीटा जिंस हितला सेंटर हाउ कि स्टेट हाउ केते मैक्सिमम मिनिस्टर रही परिबे सेंटर केस रे 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा जोटा कि हमर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर स्टेट केस रे 15% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ओके मने रखिबाटा 2009 रा क्वेश्चन थिला okay so 2003 रे हमर कोन इंपोर्टेंट प्रोविजन थिला जोटा हमें एबे देखिले 91st अमेंडमेंट एक्ट केबे 2003 ने आस्थिला इथे कोन हितला तो टोटल मेंबर ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द total member of the house of the people okay तेणु भलसे सेति में कहूची लक्ष्मीकांत को जदी लाइन बाय लाइन पढिबो आ तुमको सिविल सर्वेंट हबार अछि रट्टा मारी के मने रख पिला कहंदी दिल्ली रे 42 थरा जदी तमे पढि दबो लक्ष्मीकांत यू विल बिकम ए आईएएस 42 टाइम्स तुमको पढिया को एइटा तांकर माने दिल्ली रे कहन जदी 42 थरा पढिना तान लक्ष्मीकांत हम पढिने बोली धर ओके तो सेति की थरा पढिबो माइंड पूरा प्रिंट करिक रहला ओके सो 92 अमेंडमेंट एक्ट रे दिस आर्टिकल प्रोवाइड द इंक्लूजन ऑफ 4 एटा भी परीक्षा रे पढितला 92nd अमेंडमेंट एक्ट रे चारिटा लैंग्वेज ओपीएससी रे पढितला बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली 8 शेड्यूल ले जो हमरा ऐड करा गला तो चारिटा तो एटा केबे ऐड करा ओके 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 रे एटा यूपीएससी 2024 रा क्वेश्चन बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली तो चारिटा जो लैंग्वेज ऐड कराइतला हमरा वर्तमान 8 शेड्यूल केतटा लैंग्वेज अछि 22 डा अछि तो 18 थिला एई चारिटा लास्ट को ऐड कराइछि बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली लास्ट चारिटा जेटा ऐड कराइ ओके एटा गोटे क्वेश्चन करो with reference to union government consider the following the constitution of india provides that all the cabinet ministers are compulsorily the sitting member of lok sabha only the union cabinet secretary operates under the direction of the ministry of parliamentary affairs तो कौन हवा आंसर ओनली 2 फर्स्ट ऑफ भूल काहे कि ना तमरो all the cabinet minister can be member of either house एमिति कोन राज्यसभा रो के नहांती ना निर्मला सीतारामन जे फाइनेंस मिनिस्टर ते राज्यसभा रो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर राज्यसभा एटी जो लोकसभा ओनली दैट इज रॉन्ग ओके
and second union cabinet secretary operates under the direction of the minister. Okay, in India the chairman of national water resource 2009 question national water resource ro chairman kiye Prime Minister. Prime Minister. Okay, mane rakhiba Prime Minister होउचंती हमर चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल ये नीति आयोग रो चेयरमैन किए प्राइम मिनिस्टर. ओके, देन हमर नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल देन तमरा हमर रहिला इंटरस्टेट काउंसिल तो ये सबूर चेयरमैन किए ना हमर आ गोटे गंगा काउंसिल नेशनल गंगा काउंसिल तो ये सबुथिरा हमर किए ना प्राइम मिनिस्टर होछन हमर चेयरमैन. ओके, मन रखिबो. सो प्राइम मिनिस्टर पर मु 10 मिनिट्स रे कहूची तमे चैप्टर भल से पढिबो. ओके, सो प्राइम मिनिस्टर होछन हमर हेड ऑफ द गवर्नमेंट रियल पावर अंकाते रहउची अंको डी फैक्टो बोली कहै छै. सो प्रेसिडेंट होछन डी जियोर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड एंड तन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कहै जाय अंको हेड ऑफ द गवर्नमेंट डी फैक्टो एंड अंको रियल एग्जीक्यूटिव बोली हमर कहै जाय. ओके, सो हमर प्राइम मिनिस्टर का जो पावर हमर रहउची जे कौन पावर ना ही रेकमेंड प्राइम मिनिस्टर तो निजे अपॉइंटेड होछन प्रेसिडेंट का द्वारा किंतु अदर को माने तांको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहिबे एटा किए कहबो प्राइम मिनिस्टर कहबे. सो प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड द पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए प्रेसिडेंट एज ए मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट. सेकंड हैला ही एलोकेट एंड रीशफल तांको जहा को जो डिपार्टमेंट दबा कथा देई परिबे और चेंजेस भी करि परिबे. ही कैन एलोकेट एंड रीशफल. He can make a minister resign, advice करबे तबे resign कर दियो. ओके, एंड जदी सीए रिजाइन करिवे हमर कोन ना पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट हमर कोलैप्स हो. सो प्राइम मिनिस्टर दि रिजाइन करिवे हमर गवर्नमेंट कोलैप्स हो. एइडा भी हमर पढितला जे ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तेनु जहां भी प्रेसिडेंट को दरकार सी ही कम्युनिकेट करन टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन. कौन नुआ लॉ आसीबो कौन हमर एबे एडमिनिस्ट्रेशन मैटर एनीथिंग तो सब किए काहा को से जणेबे ना हमर प्रेसिडेंट को हमर. ओके, हां एइटा गोटे मन रखिबो जे से कौन को थिरा हमर क्वेश्चन हमर पडुची. ही इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन जोटा कि वर्तमान नीति आयोग हे जायछि. ओके, नीति आयोग हे जायछि. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी रो चेयरमैन. ओके, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल रो चेयरमैन. इंटरस्टेट काउंसिल हमर नेशनल वाटर रिसोर्स रो काउंसिल ए सबु थिरा सी होछन चेयरमैन. मन रखिबो तो परीक्षा रे पडुची. सो 23टा क्वेश्चन हमर पार्लियामेंट चैप्टर रु पढी छी. ओके, तेनु वेरी इंपोर्टेंट मते फर्स्ट क्वेश्चन आंसर को with reference to the Parliament of India consider the following statement. A private member bill is a bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by the President of India. Recently a private member bill has been passed in the parliament for the first time. Okay, D का भूल. No. So neither one nor two. Private member माने किए private member bill माने किए other than minister. अदर देन मिनिस्टर. गवर्नमेंट रो मिनिस्टर को छाडी देला आ किए भी बिल नै के आसुची से रूलिंग पार्टी रो हेतु किबा अपोजिशन पार्टी रो हेतु तो सेटा हम कहबा प्राइवेट मेंबर बिल बोली. सो प्राइवेट मेंबर बिल ए बिल प्रेजेंटेड बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ए मिनिस्टर सेटा हम कहजे प्राइवेट मेंबर. सेकंड, प्राइवेट मेंबर बिल ऑलरेडी आगु बहुत थर माने ता पूर्व पास हेई सजे नॉट द फर्स्ट टाइम. सो 2017 क्वेश्चन पड़ितला डी डा का हमरो रॉन्ग. ओके, सो प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक बिल भीतर डिफरेंस कोन. प्राइवेट मेंबर बिल
it is introduced by any member of the parliament other than a minister. Okay, public bill माने कोन जोटा मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करछ. ओके, तो डेफिनेटली हमरा कोन होछि ना इट रिफ्लेक्ट द जदी गवर्नमेंट ओटे बिल नै के सेटा गवर्नमेंट रो पॉलिसी आउ एडा कोन ना अपोजिशन पार्टी माने जनरली हमरा प्राइवेट मेंबर बिल नै के आसी परिबे कोडार चांस हमरा पास होवर ग्रेटर अछि. पब्लिक बिल कारण मेजॉरिटी गोटे बिलटा पास होबा पई तुमको बोथ हाउस रे सिंपल मेजॉरिटी का पाखरे रूलिंग पार्टी पाखरे ना नहीं. तेणु तुम भावुच गोटे प्राइवेट मेंबर बिल आसिले एटा इजीली पास हबो ना हबो लेसर चांस हबनी काहे कि गवर्नमेंट चाहि माने गोटे बिलटा पास हो तांको छडा आउ कि गोटे बिलटा पास करू क्रेडिट तो तांको ना रे पळेबो ना. तो सेति पई आ जेहेतु लोकसभा रे आंकर मेजॉरिटी अछि ये करे को ही देबेनी. ओके, सो गोटे पब्लिक गवर्नमेंट बिलटा इजीली पास हे परिबो आ प्राइवेट मेंबर बिलटा लेसर चांस टू बी हमरो पब्लिक बिल जदी हमरो रिजेक्ट हे जाउची. If rejection by the house amount to amara kono na parliamentary confidence in the government and may lead to resignation. जदि amara ओडे government ओडे bill टा आनी छि आ लोक सभा रे suppose एटा amara reject हे गल तामाने majority तांकर नाही. ओके, and एटा जदि amara definitely rejection हल no implication एटा rejection हबो ही हबो काहे ना government चाहिबोनी कि आउ के माने देखि जानतु. ओके, एंड गोटे मन रख पब्लिक बिल टा इंट्रोड्यूस हवा पई 7 दिन नोटिस दरकार. आर केते दरकार 1 मंथ हमरो नोटिस दरकार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. 2016 रे पढितला ए क्वेश्चन था. ए बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन. ए बिल पेंडिंग इन राज्यसभा व्हिच हैज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा shall not lapse on dissolution of the Lok Sabha. Huh? There are only two. B. कौन हबा आंसर? दीडा को ठीक अछि. ओके, गोटे बिल टा जदि लोकसभा रे पेंडिंग हे के अछि लोकसभा भांगी गला बिल टा भी लैप्स हे. ओके, सेकंड हला गोटे बिल टा राज्यसभा रे पेंडिंग हे के अछि लोकसभा को जाइल. ओके, व्हिच हैज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा shall not lapse. एटा लैप्स हबनी इवन इफ हमरा लोकसभा डिसोल्यूशन हे जाउची. तो एथिरे देखो कोन कोन हमरा रूल टा पढिबो एथिरे कारण आप रे दीटा क्वेश्चन पढि सलानी. ओके, when Lok Sabha is dissolved, बर्तमान Lok Sabha already भांगी जाइछ, dissolve हो जाइछ, and all the business including the bills, motion, resolution, notice, petition also and so on pending before its committee lapses. जदि ता पाखरे जहा भी बिल जहा भी अछि जदि एटा डिसॉल्व हे गला ताहाले सेटा हमर कोन हबो जोडा पेंडिंग अछि सेगुडा को भी सब डिसॉल्व. ओके, ताको आउ थरे तुमको आनिया को पड़ियो. फास्ट कथा. ओके, so they to be must be reintroduced in the newly constituted Lok Sabha. Lok Sabha रे भांगी गला माने जहा ता आगे पेंडिंग अछि सबु लैप्स हे जिवो आउ थरे तमे सब किछि नुवा इंट्रोड्यूस करिया को पड़े. रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, कंफ्यूजन हबनी कारण आकु नै कि ओपीएससी रे भी गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ी छि. तमे ओपीएससी रे क्वेश्चन देखो. सो ऑल से मन रखो जो इंपोर्टेंट कांसेप्ट है. हाउएवर some pending bills, all pending assurance that are examined by the committee of government assurance do not lapse on dissolution of Lok Sabha. The position with respect to last do kokoda lapse hi jaye of a bill as follows. All the pending in Lok Sabha, all the bill, a bill जोटा हमारा pending in Lok Sabha lapses. जदि लोकसभा डिसॉल्व होची जो भी पेंडिंग अछि सेटा लैप्स हे. हां कोन थिला ना बिल्डिंग ए बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन भी लैप्स हे जाय. हां राज्यसभा रे अछि सर. हां एटा प्रोरोगेशन थिला.
ओके एटा हमर डिजॉल्व नहीं प्रोरोगेशन थिला ओके एटा हम पढुचे लैप्सेस ऑन डिजॉल्व पढुचे ओके प्रोरोगेशन ने हबन ओके प्रोरोगेशन थिला एटा सो ए बिल लैप्सेस ऑन लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा यदि गोटे बिल टा लोकसभा रे पास हेई जाईची एंड राज्यसभा रे पेंडिंग हेई के अछि जदि भी लोकसभा डिजॉल्व होची तो एटा हमर लैप्स हो जाय ए बिल नॉट पास बाय two house due to disagreement if president notified a joint sitting before the dissolution of the Lok Sabha does not lapse माने दीटा का हाउस रे हमरा बर्तन पास हेनी डिसएग्रीमेंट हेई के अछि प्रेसिडेंट हमरा जॉइंट सिटिंग डाकी छंती सपोज एटा हमरा लोकसभा डिजॉल्व हे गला ताले एटा हमरा लैप्स हुए ए बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास बाय लोकसभा डज नॉट लैप्स एटा पडितला ए जो पॉइंट हमरा पडितला सो गोटे बिल टा राज्यसभा रे पेंडिंग हेई के अछि लोकसभा रे पास हेनी तो एटा हमरा लैप्स करे ए बिल पास बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट पेंडिंग इन प्रेसिडेंट कर अप्रूवल पई एटा हमरा लैप्स हुए ए बिल पास बाय बोथ हाउस बट रिटर्न टू द प्रेसिडेंट रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकमेंडेशन ऑफ द हाउस डज नॉट लैप्स तो ए कंडीशन उडा के तमे माने रखियो ओके तेनु लक्ष्मीकांत रा तमरा सेही माने जो पोर्शन नु क्वेश्चन पड़ी छि सेगुडा का तमरा Okay, next question 2015 रे पढ़ितला when a bill is referred to a joint sitting of both house of the parliament it has to be passed Simple majority. simple majority पास हुए ओके प्रथमे तो मन रख जॉइंट सिटिंग केते नंबर आर्टिकल परीक्षा रे पढ़ितला 108 जॉइंट सिटिंग किए डाकंती प्रेसिडेंट हमर डाकंती ओके प्रेसिडेंट हमर जॉइंट सिटिंग डाकिबे किए एटा को प्रिसाइड करिवे प्रिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा ओके सो जेतेबेला हमर डाकिबे तो सेही जो बिल टा पास हबो तो सेटा कोथिरे पास हुए ना सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग तेनु जेहेतु लोकसभा रे मानकर मेजॉरिटी अछि तो जेतेबेला जॉइंट सिटिंग हुए तो ग्रेटर चांस होची हमरा गवर्नमेंट रो बिल टा पास हमरा तेनु मने रखिबा जॉइंट सिटिंग टा 101 आर्टिकल ले प्रेसिडेंट डाकंती केतेबेले जॉइंट सिटिंग रखा जाए ना व्हेन देयर इज ए डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग एनी बिल बिटवीन हमरा लोकसभा राज्यसभा ओके को बिल टा हमरा केवल जॉइंट सिटिंग को बिल केस रे हमरा जॉइंट सिटिंग रखा जाय पारिबो ओके तेनु मने रखिबा ओनली ऑर्डिनरी बिल केस रे ऑर्डिनरी बिल केस रे हमर जॉइंट सिटिंग डका जाई परिबो हमर मनी बिल किबा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल केस रे हेई परिबनी काहे कि मनी बिल केस रे हबनी ना मनी बिल केस रे हमर डिसएग्रीमेंट हबार चांस ही नहीं मनी बिल टा लोकसभा रे पास हेगला राज्यसभा रे कोनोसी अप्रूवल दरकार नहीं आ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टा बोथ हाउस रे स्पेशल मेजॉरिटी पास हो सेति रे तो डिसएग्रीमेंट रा क्वेश्चन उठुनी बोथ हाउस रे तमरा तेनु एइटा भी परीक्षा पडितला तमरा ओपीएससी 2022 रे जे को बिल केस रे केवल हमर जॉइंट सिटिंग डका है परिबा को बिल केस रे ऑर्डिनरी बिल केस रे बुझि पल्ला ना ओके सो आंसर अब हमरा ए हिजबो करेक्ट आंसर ओके तो ऑडी को केस रे हमरा कोन होची ना हमरा जॉइंट सिटिंग डका जाय if the second house pass a bill without any amendment or the first house accept the amendment suggested by the second, the bill is deemed to be passed by both house of the sent to the president for his action on otherwise हमारा joint sitting टा केतेबेले डका जाए on the other hand if the house reject the amendment suggested by the second house or the second house reject the bill altogether okay the second house does not take any action in 6 months a deadlock deemed to be taken place तो केतेबेले डेडलॉक हुए धर गोटे हाउस रे पास है चा गोटे हाउस रे पेंडिंग हे अछि 6 मास हला तो ए जो हमें कहूचे ए जो डेडलॉक अछि ए डेडलॉक टाकू हमर प्रेसिडेंट हमर डाकंती प्रेसिडेंट कैन समन ए जॉइंट सिटिंग तेनु जॉइंट सिटिंग टा प्रेसिडेंट डाकंती एंड इफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग जेति की लोक हमर सेही जॉइंट सिटिंग रे थिबे अवेलेबल थिबे तार सिंपल मेजॉरिटी धर सेही दिन टोटल 5 लोक आछंदी हमें दीटा को मिसे देले केते होची 788 ओके हमरा 543
245 788 788 रु से दिन सपोज आइसिन 600 लोक तो 301 जन हमर जदी से बिल ऑफ फेवर दे देले ताहाले हमर बिलटा पास होली धरा ओके and important thing to मन रखिथिबो joint sitting is presided over by the speaker of the Lok Sabha okay तो जदी स्पीकर नांदी ताले डेप्यूटी स्पीकर करिवे डेप्यूटी स्पीकर जदी एब्सेंट अछन ताले की करिवो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा करिवे ओके जदी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा हमरो अवेलेबल नांदी ताले की करिवे एनी अदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज एग्रीड अपॉन बाय द हाउस ओके तो मन रखिबो स्पीकर करिवे स्पीकर नथिले डेप्यूटी स्पीकर नथिले डेप्यूटी चेयरमैन नहल नै पार्लियामेंट जाको एडा देखो सेम क्वेश्चन दा 2012 रे पडितला जो क्वेश्चन हमें जॉइंट सिटिंग नहीं करथले ए डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द को बिल केस रे हमरा जॉइंट सिटिंग हे करिवे कोन हबो ओनली ऑर्डिनरी बिल केस रे हमें कहले मनी बिल केस रे तो माने डेडलॉक हबार चांस नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केस रे तो बोथ हाउस रे स्पेशल मेजॉरिटी पास हो ओनली ऑर्डिनरी ए क्वेश्चन दा डिटो टू डिटो ओपीएससी 2022 ना 21 रे पूरा टापी दिया जेतला ओके सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तनो हमें क्वेश्चन जेतले करूचे एथिरे कोन होची ना तम कांसेप्ट तो क्लियर होची ता संगे रे जोडा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुमको जहां भी बुले जदी पढु छी भी तमे आराम से करि परिबो ओके सो आंसर कोन हबो ओनली 1 हिजबा हमरा करेक्ट आंसर 2017 गोटे क्वेश्चन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू adjournment motion क्वेश्चन आवर सप्लीमेंटरी क्वेश्चन केमिति पार्लियामेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करूछ ऑल ऑफ द अबव adjournment मोशन क्वेश्चन आवर सप्लीमेंटरी क्वेश्चन ए सब मते को adjournment मोशन माने कोन अर्जेंट सिचुएशन जदी कोनसी गोटे एमिति गोटे घटना घटी जोटा ऊपर हमर अर्जेंट डिस्कशन हवा दरकार जोटा कि पब्लिक इंपोर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू रु गोटे अर्जेंट मैटर तो सेईटा को माने जत्ते पार्लियामेंट रो काम अछि सब बंद बंद करी कि ता ऊपर डिस्कशन हबो सेठी में हमर गोटे अर्जेंट मोशन आसे अर्जेंटमेंट मोशन आसिले हमर केते समय हमर डिस्कशन हुए ओके 2.5 घंटा हमर ओके 2.5 घंटा हमर आ ऊपर हमर डिस्कशन 2 घंटा 30 मिनिट मिनिमम डिस्कशन अब अर्जेंटमेंट मोशन पास हेले जत्ते काम अछि जो जत्ते भी बिल फिल सब बंद करा जिवो आर ऊपर हम डिस्कशन करा सेकंड क्वेश्चन आवर हमर कोन ना तमरा पार्लियामेंट स्टार्ट हुए 11टा बेल 11टा बेल पार्लियामेंट की विधानसभा 11टा रु स्टार्ट हुए 11टा रु 12टा एइटा रे कोन हुए ना क्वेश्चन पचरा हुए खाली त मिनिस्टर को पचरा हबो जे तमे कुहो लास्ट 1 ईयर भीतर तमे एजुकेशन ने कोन खर्च करछ मो एरिया रे एजुकेशन ने केतडा खर्च होइछि पूरा डिटेल तांको क्वेश्चन पचरा त क्वेश्चन माध्यम रे से जो कोन करूछंती ना हमरा मिनिस्टर माने को क्वेश्चन करूछंती त कंट्रोल करूछंती तमे यदि कहिबनी ठीक सठिक डाटा न दबो तम एगेंस्ट रे माने मोशन आनिबे त सेति पई 11 रु 12 जोटा थाए एटा को हमर कहंती क्वेश्चन आवर ओके एटा कोन कहंती क्वेश्चन आवर ओके एंड सप्लीमेंटरी क्वेश्चन एटा ही पछारी परिबो तो ऑल थ्रू 1 2 3 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर जेते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जदी मॉक टेस्ट हमको ठीक रे एनालिसिस करिथिबो ऑल द क्वेश्चन सब कवर कर जो पॉलिटी रा तमे जदी देखिबो 3टा 4टा टेस्ट जदी देखिबो जोडा इंपोर्टेंट कांसेप्ट जोडा को माने परीक्षा रे निहाती दरकार एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तमरा मॉक टेस्ट रे कवर कर तेनु मॉक टेस्ट जेते जदी तमे भल से देइछ that means you have know this question आर क्वेश्चन द मीनिंग आउ कोन तार तमे जानि परिबो ओके सो जो माने मॉक टेस्ट देइ थिबे फर्स्ट रु ते माने आराम से करि परथिबे 2014 रे गोटे क्वेश्चन पडितला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन ने देयर इज no mention of no confidence motion in the constitution of India a motion of no confidence can introduce in Lok Sabha only कौन हवा आंसर both have a correct answer okay both have हमारा correct answer
नो कॉन्फिडेंस मोशन टा हमर कोठी संविधान रे लिखा है। सेकंड कथा ला जदी नो कॉन्फिडेंस मोशन टा कोठी आना जाए केवल लोकसभा रे केवल ओके आमे सेहि पई कहिथिले जे काउंसिलर मिनिस्टर रेस्पोंसिबल टू लोकसभा ओनली सेमानकर जो पर्यंत लोकसभा रे मेजॉरिटी अछि से पर्यंत दे विल बी इन द पावर द मोमेंट दे लॉस्ट द मेजॉरिटी इन लोकसभा सेमानकर गवर्नमेंट भांगी जीवो तेनु नो कॉन्फिडेंस मोशन माने कोन से माने गवर्नमेंट को कहउछंती जे तमे कॉन्फिडेंस देखाओ जे तमरा मेजॉरिटी अछि बोली लोकसभा रे सो ए नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा लोग राज्यसभा रे एटा इंट्रोड्यूस हे परिबनी राज्यसभा रे कोनोसी से नाही हमर कोन ना नो कॉन्फिडेंस मोशन वर्तमान भी तो राज्यसभा रे हमर गवर्नमेंट रो मेजॉरिटी नाही ता बोली कोन गवर्नमेंट भांगी जाईछि ना कोन नाही केवल जदि किंतु आंकर 240 टा सीट वर्तमान बीजेपी रे अछि माने गठबंधन सरकार करी के हमर करिसंती जो दिन आंकर नंबर ऑफ सीट 272 रु कमिबो द मोमेंट से दिन नरेंद्र मोदी कर सरकार भांगी ओके तेनु एमाने जो गठबंधन सरकार नै चलछंती नीतीश कुमार आउ हमर चंद्रबाबू नायडू एमाने को नै चलछंती सेमान जदि सपोर्ट विड्रॉ करनेबे ताका गवर्नमेंट भांगीबार बहुत चांसेस अछि मु तमको जो पचारथिले एडजर्नमेंट मोशन माने कोन 2012 क्वेश्चन पड़िथिला एडजर्नमेंट मोशन माने कोन ए टू अलाउ ए डिस्कशन ऑन ए डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस गोटे इंपोर्टेंट पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू गोटे इंपोर्टेंट मैटर ता हमर डिस्कशन करा जिवो जोटा कि मिनिमम 2.5 घंटा हमर डिस्कशन करा जिवो ओके सो एडजर्नमेंट मोशन मने रख कोन so a motion introduced in parliament to draw the attention of the house to a definite matter of urgent public importance okay and the need एटा पई तमको 50 जन मेंबर द सपोर्ट दरकार सिग्नेचर करी के देबे तापरे एडमिट हबो as it interrupt the normal business of house it is regarded as a extraordinary device it involves an element of censure against the government and hence Rajya Sabha is not permitted to make use of this device tenu adjournment motion ta amara lok sabha re amara introduce habo the discussion of an adjournment motion should last for not less than 2 घंटा and 30 minutes 2.5 घंटा minimum तार discussion 2 hours and 30 minutes it amara discussion okay and एटा तमर मन रखि थाओ तो को उडान हमर गोटे इंपोर्टेंट पब्लिक मैटर जोटा अर्जेंट हमर डिस्कशन हो दरकार एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन हमर हमें कहिले नो कॉन्फिडेंस मोशन दा मन रखि था एटा हमर कोन होची ना हमर इंट्रोड्यूस ओनली कोठी फॉर इट्स अडॉप्शन इन लोकसभा ओनली ओके नो कॉन्फिडेंस मोशन दा लोकसभा आना जाए तो एटा काउंसिलर मिनिस्टर अगेंस्ट आना जाए जदी नो कॉन्फिडेंस मोशन ता पास हे गला लोकसभा रे गवर्नमेंट भांगी जे दैट मींस दे डोंट हैव द मेजॉरिटी इन लोकसभा क्वेश्चन आवर हमर कोन ना हमर जो 11 टा 12 टा हमर कहला फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंटरी सिटिंग पार्लियामेंट स्टार्ट हुए 11 टा 12 टा जो घंटा टा सेडा हमर क्वेश्चन आवर थाए एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द मेंबर आस्क द क्वेश्चन एंड द मिनिस्टर यूजुअली गिव द आंसर तो इथिरे हमर मिनिस्टर माने को क्वेश्चन पचरा दिबो बाय द कहा द्वारा ना हमरो मेंबर माने द्वारा पचल 2015 रे आउट क्वेश्चन पडितला with reference to the union government consider the following statement the department of revenue is responsible for preparation of the budget that is presented to the parliament no amount can be withdrawn from the consolidated fund of india without authorization from parliament of india all the disbursement of made in public account also need the authorization from Parliament of India. कौन हबो only two हमर बजट ता के प्रिपेयर करछि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एटा भी परीक्षा रे हमर ओपीएससी रे पड़ितला रेवेन्यू नो डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हमर बजट प्रिपेयर करछ ओके जहां भी तमे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु पैसा उठेबा को चाहौ छ एवरीथिंग टंकाडे भी उठेबा को चाहौ छ तो एटा हमर कहउछि
पार्लियामेंट रो अप्रूवल हमर निहाती दरकार ओके पार्लियामेंट रो हमर अप्रूवल निहाती दरकार पब्लिक अकाउंट रो पैसा उठिया कोले पार्लियामेंट रो अप्रूवल दरकार नहीं पब्लिक अकाउंट पई हमर कार ना डायरेक्ट हमर एग्जीक्यूटिव माने डायरेक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव माने प्राइम मिनिस्टर माने डायरेक्ट नहीं परिबे माने कर पार्लियामेंट रो अप्रूवल हमर दरकार नहीं बुझी पाइला ना बुझी पाइलानी कार किछ डाउट अछि सर टिके जो पब्लिक अकाउंट और कंसोलिडेटेड फंड के डिफरेंस है कौन ओके हमर तीनटा फंड हमें पढितले ओटेला हमर कोन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड माने कितना नंबर आर्टिकल कहितले 266 266 कंटीजेंसी फंड 267 7 and public account 266 ए डीडा कहउची 266 आ कंटीजेंसी फंड होची 267 ओके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु कंसोलिडेटेड फंड माने कोन जहां भी हमर पैसा आसुची थ्रो टैक्स हो थ्रो लोन हो दिस इन्वेस्टमेंट हो जहां भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा आसुची सब पैसा कोठी रहउची कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पब्लिक अकाउंट रे कोन रहउची ना तमरा जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स है पीएफ सब्सक्रिप्शन पीएफ तमरा रहिला जो प्रोविडेंट फंड रो जो पैसा कटी कोडी रहउची ए पब्लिक अकाउंट तेनु गवर्नमेंट ए थ्रू डायरेक्टली खर्च करि परिबो पार्लियामेंट रे अप्रूवल दरकार नहीं प्रोवाइडेड हमको 8% इंटरेस्ट दबो से हम पीएफ रे तुमको 8% इंटरेस्ट मिलुछ ना नहीं तेनु जहां भी खर्च करिवो तुमको 8% से इंटरेस्ट दबो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रु पैसा हमरा उठिया कहले कहार अप्रूवल दरकार प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट करा हमरा कोन ना अप्रूवल दरकार एंड ए जो प्रेसिडेंट करा अप्रूवल दरकार तो एथिरे हमरा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रे टोटल केते मनी अछि बे 30,000 करोड़ 30,000 कोटी टका हमरा अछि ओके तो 30,000 कोटी टका बर्तन हमरा एई कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रे अछि नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ द पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया को आंसर कोन हमारा okay which of the following are the method of the parliamentary control over public finance placing annual financial statement before parliament parliament रे प्रति वर्ष हमर बजेट हमर प्लेस होची ओके तो एक तो डेफिनेटली हमर ठीक अछि तो एक जोथरे नाही रिमूव करा सीडा नहीं withdrawal from money from consolidated fund after passing हमर appropriation bill yes दुई हमर ठीक अछि दुई जोथे नाही दुईटा सबुथिरे अछि ओके दुई तापर तीन प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंटरी ग्रांट एंड वोट ऑन अकाउंट एटा भी अछि ओके ए पीरियडिक एंड एटलीस्ट ए मिड ईयर रिव्यू प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट माइक्रो इकोनॉमिक एटा भूल अछि ओके एमिति हमर कोन मिड ईयर रिव्यू प्रोग्राम होछि कि गवर्नमेंट रो होउनी ओके तो हमर कोन हबा आंसर 1 2 3 5 ए हिजबा हमरा करेक्ट आंसर ओके ए हिजबा हमरा करेक्ट आंसर हां कोडा माने पैसा धर तमरो सरकार आउ तमे मागी परिबो धर जति तम बजेट थिला पर सपोज शॉर्टेज हैला त मागी परिबो आउ पैसा ओके एडिशनल पैसा मागी परिबो So what is the difference between vote on account and interim budget? कौन था रहो मैं पचारला सेटा गोटे क्वेश्चन
So vote on account और interim budget भितर difference कौन? The provision of vote on account used by a regular government, while an interim budget is provision used by caretaker government. A vote on account only deals with the expenditure of the government budgets, while interim budget include both expenditure and receipt. Come answer. देखी दियो ओके एठी देखी दियो vote on account कौन vote on account हला appropriation bill of financial bill are presented in the month of February and they take their own time to become an act. In order to keep the government functioning, the house is asked to vote for approximately 1/6 of the total estimated expenditure under various grants. So this is called vote on account. तमरो धरो बिल टा जो बजेट आसुची धरो appropriation bill में रखिलो 50 लाख रखिलो ए वर्ष रो बजेट हमर केते 50 लाख टका रखिलो किंतु एइटा पूरा पैसा कोन से संगे संगे कहलो माने दे देबे की तुमको 2-3 मास पर देबे किंतु से 2-3 मास जाए जो खर्चटा कोठो आनिबो तुम तेनु से कहबे जो टोटल बजेट ता में देइचू तार 1/6 दे दियो 50 लाख यदि हमें कहूचे 60 लाख ताले 10 लाख कोटी दियो जोडा हमें पूरा 3 मास जाए जो खर्च हबो ताकू चळेबो ओके सो एटा हमर कोन कहूचे vote on account. Vote on account is passed after the general discussion of the budget. Budget दिन धर सरी गला डिस्कशन से दिन कहबे हमको 50 लाख रो एटलीस्ट 10 लाख दे दियो तो पार्लियामेंट अप्रूवल करके दे दो सो दैट से माने 2-3 मास जाए जो पर्यंत फाइनल अप्रूवल न होई छी से चलो धर तुमको धर तुम गोटे जगह खर्च करिचो 50,000 तमें कौन कर 50,000 खर्च कर तो तुमको कहबे 5,000 एटलीस्ट दे था मु चलू थाए ओके एडवांस जेंती मागी की नहीं जानती हमें कहबो से भले एडवांस मागी की नहीं. So usually it is treated as a formal matter and passed without discussion. So vote on account as per provision of Article 116 of the Constitution. This makes clear that the vote on account can be passed on occasion where government needs some extra money on its disposal to keep running the administration till appropriation act is passed. तेनु तमरा फाइनल पैसा ना मिलिया पूर्वरु तमे एडवांस एटा नै परि. So related to only taking money out of consolidated fund and thus limited to expenditure side. तापरे can be passed by all government whether एटा हमारा regular government हो or caretaker government हो. Vote on account तमे किए भी नहीं परे. Vote on account become a special importance when the election are underway and caretaker government is in place. Okay, interim budget कौन जो वर्ष इलेक्शन सपोज होउची ओके से वर्ष से गवर्नमेंट आसी पारे न आसी पारे तमे गोटे फुल टूल बजेट आनिबा कथा नहीं तो सेही जो हमें कहबा जो वर्ष इलेक्शन थाए सेही जो बजेटटा हुए सेटा को हमें कहंती इंटरिम बजेट. So while vote on account deals with expenditure side of the government budget, interim budget is completely set माने both expenditure आउ हमरो receipt रहइबो. When a government present vote on account as a part of the budget exercise to appropriation bill, appropriation vote on account bill and appropriation bill of that year as passed. Interim budget can also presented by all government or incumbent government and regular and caretaker. However, interim budget become a special importance when election are under. जो वर्ष हमर इलेक्शन चली थाए सेही वर्ष हमर बजेट ता तमरो interim budget generalize थाए. When an annual budget is not passed by Lok Sabha, जदि लोक सभा रे तमरो बजेट ता पास सपोज हैला ताले कोन हबो प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोन में प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करिवे. सो यूनियन बजेट माने एटा गोटे मनी बिल. सो मनी बिल ता पास होबा पे हमर केवल लोक सभा रे पास होबा दरकार दैट टू सिंपल मेजॉरिटी. तेनु गोटे मनी बिल ता जदि पास हे पारुनी दैट मींस तमरो लोक सभा रे सिंपल मेजॉरिटी नहीं. सिंपल मेजॉरिटी नहीं माने यू आर नॉट एंजॉयिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस. तमरो तम पाके 272 सीट थिले तो तमरो बजेट और मनी बिल इजीली पास ही थांता. तेनु तमरो जदि 272 सीट नाही दैट मींस यू लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस यू मस्ट रिजाइन. तेनु जदि बजेट फेल हे गला लोक सभा रे ता माने
तुमको तमरा मेजॉरिटी नाही एंड प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन द काउंसिल लिस्ट। ओके तो प्राइम मिनिस्टर कौन करेंगे रिजाइन हमर कर दे बुझि पाइला ना बुझि पाइलानी। सो डी हेज द करेक्ट आंसर। Which of the following is responsible for preparation and presentation of union budget of the parliament? परीक्षा में एबे आगु डिस्कशन करथिले तो किए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ओके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर होचे हम बजेट को प्रिपेयर करू। All the revenue received by the union government by the way of tax and other received from for the conduct of the government business are credited to। मु कहली जहाँ भी पैसा आसुची टैक्स थ्रो रे आसुची लोन थ्रो रे आसुची जहाँ भी आसुची कोठी जाई कि पैसा रहे सबठी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 2011 क्वेश्चन थिला एटा। द ऑथराइजेशन फॉर विड्रॉल ऑफ द फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रे पैसा उठेबा को हेले काहार अप्रूवल तमरा दरकार पार्लियामेंट रे अप्रूवल दरकार हम कहले। So it must be passed by the parliament of the तेणु ये मन रख बजेट उपरे जदि हम पढ़ला एटा को हम कहछ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ बजेट हमर कॉन्स्टिट्यूशन कोडी लिखा नै बजेट हैज नो हायर मेंशन बजेट वर्ड हमर कोडी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नै किंतु 112 जो लिखा है जी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने कोन वर्षा ग्रे केते हमर पैसा आसिला केते खर्च होला सेटा गोटे हम कहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजेट हमर स्टार्ट हुए केबे ना गोटे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल रु स्टार्ट हबो 31 मार्च नेक्स्ट ईयर पे। एई जो बजेट हमर एबे प्रेजेंट हैला तो 31 अप्रैल 2025 रु हमर को जाय जिवो 31 मार्च 2026 जाय। तेनु हमें बजेट को ईयर कहूचे जेहेतु 25 रो आ 26 रो मिसा मिसे ही अछि। So this is the budget year 25 और 26। ओके तो ये बजेट रे हमें देखिबा ये जो स्टेटमेंट हमें मन रखो नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ एंड एटा हमर कोन होची पार्लियामेंट रा अप्रूवल पर ही हमर कोन ना तमरा पैसा ता तमे उठे करिबो। ओके सो हमर रिलेटेड टू हमर बजेट को नै कि हम जो देखिबा इट इज टाइप ऑफ ए मनी बिल। ओके एंड राज्यसभा हैज नो पावर फॉर to vote on demand for grant। it is exclusive privilege of Lok Sabha। Lok Sabha रे केवल पास होबा जदि Lok Sabha रे एटा पास न होची that means you lost the majority in the Lok Sabha हमर गवर्नमेंट भांगे जबे। ओके चार्ज एक्सपेंडिचर ए सब छाड़ा हां ए जो तीनटा का हम पढिथिले जे तुम पचारथिलो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266 कंटीजेंसी ऑफ इंडिया हमारा 267। तो जहां भी ऑल द रिसीप्ट आर क्रेडिटेड एंड ऑल द पेमेंट्स आर डेबिटेड ए सबुडा कोठो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रेटा रहे। ओके सो पार्लियामेंट रो ऑथराइजेशन पर जहां भी पैसा उठा जिवो एटा हमारा पार्लियामेंट रो ऑथराइजेशन पर। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया रे हमारा कोन रहे को डिपोजिट गुडा को ना जेमिति के हमें कहबा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक बैंक रो डिपोजिट गुडा को रहला और तमरो पीएफ अकाउंट गुडा को रहला तो से गुडा के हमरो रहे आउ एई गुडा को पाई हमरो मने रखो आर पैसा उठेया कहले कैन बी मेड माने एटा को विथड्रॉ करि हबो विदाउट पार्लियामेंट रो अप्रोप्रिएशन। पार्लियामेंट रो अप्रूवल बिना एटा हमें कोन करबो ना उठे परबो। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जोटा हमें कोन होउची कंटीजेंसी माने कोन ना जदी किछि नेचुरल हैजार्डस ही जाउची और किछि तमरो हमें कहबा इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा उठे पड़ुची तो एटा हमरा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया उठा जाए एंड एटा पाई हमरा कहार ना डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट का अप्रूवल हे गले हमरा। सो
आ पाई हमर कोन होची ना हमर पार्लियामेंट रो अप्रूवल दरकार नाही ओके तो पर तमे जति पैसा नै थिबो पुनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु पार्लियामेंट रो अप्रूवल कला पर सेठु आनी केथिरे थोइ दो ओके बुझी पालो ना बुझी पालोनी जनरली कोन इमरजेंसी सिचुएशन पई एई फंडा रखा हैछि तेनु सपोज मु कहबी जे पार्लियामेंट 5 कोटी टका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उठे कि नै पर जेबे पार्लियामेंट बसिबो तमे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु पैसा उठी के आनी की पुनी कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रखि दो त माने एटा गोटे रिजर्व फंड 30,000 कोटी सबोले रहिबो जेति के थ्रू उठेबो सेथ्रु कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु सेति उठे के आनी के ए सब बेले 30,000 ओके तमे जदि लोकसभा रे ठिया बाकू चाहत किए लोकसभा रे ठिया आइतरे हां तेणु तमे किए भी ठिया आइपरिबो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम appear in the electoral roll of a constituency 2017 particular question so which one of the following is the largest committee of the parliament ro largest committee के estimated committee एथिरे केते जन मेंबर थांती 30 जन मेंबर and 30 जन आक मेंबर कोठु लोकसभा 30 जन आक मेंबर ओनली लोकसभा रे मेंबर हमर थांती ओके माने रखिबो जेते कमिटी अछंती पार्लियामेंट रे सबटू लार्जेस्ट कमिटी होची एस्टिमेट कमिटी आ एस्टिमेट कमिटी रे 30 जन मेंबर थांती आ 30 जन आक फ्रॉम लोकसभा ओनली ओके तो आंसर कोन हबो हमर बी हिजबो करेक्ट आंसर 2013 रे गोटे क्वेश्चन पडितला what will follow if a money bill is substantially amended by राज्य सभा जदि गोटे बिल जदि किछि अमेंडमेंट करूची कोन हमर करिवा सर ए हबो सो करेक्ट आंसर कोन हबो ए इज द करेक्ट आंसर तमे जानि छ मनी बिल ला केत नंबर आर्टिकल 110 ओके मनी बिल दा मने रख कोठी इंट्रोड्यूस हे परियो मनी बिल ओनली लोकसभा राज्यसभा रे मनी बिल इंट्रोड्यूस हे परियो मनी बिल दा हमरा लोकसभा रे इंट्रोड्यूस हे हमरा आ पई सिंपल मेजॉरिटी दरकार ना स्पेशल मेजॉरिटी ओके मनी बिल दा हमरा सिंपल मेजॉरिटी रे हमरा कोन ना लोकसभा रे पास हुए तो लोकसभा रे पास है कि राज्यसभा को गला बेले हु decided whether it is a money bill or not or who certified na speaker okay speaker certify करंती तापरे स्पीकर सर्टिफाई कला पर राज्यसभा को जाए राज्यसभा has cannot एटा को हमर कोन अमेंड करि परिबनी कि रिजेक्ट करि परिबनी केवल सजेशन दबो एंड ओनली 14 डेज भितरे सेटा को से रिटर्न करिया को बाध्य तो जो रिकमेंडेशन गुडा को देला सेटा लोकसभा एक्सेप्ट करि पारे और न करि पारे से माने डिस्कशन करि परिबे डिबेट करि परिबे बट दे कैन नॉट चेंजेस करि परिबेनी कि रिजेक्ट करि परिबे सो राज्यसभा हैज नो पावर इन केस ऑफ मनी बिल केस रे तांकर नाही तेनु जो रिकमेंडेशन गुडा का सपोज देले सेही रिकमेंडेशन गुडा को लोकसभा मे स्टिल प्रोसीड विथ दैट बिल accepting or not accepting the recommendation of the राज्यसभा okay तेनु राज्यसभा मने रखो has no say about money bill is the exclusive power of the लोकसभा रे एटा इंट्रोड्यूस हे प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस हे लोकसभा रे सिंपल मेजॉरिटी रे पास हला परे स्पीकर एटा सर्टिफाइड करंती एटा मनी बिल ना नाही तापरे राज्यसभा को गला बेले राज्यसभा लिमिटेड से माने डिस्कशन करि परिबे डिबेट करि परिबे विद इन 14 डेज भितरे रिकमेंडेशन देई कि हमर लोकसभा को पठेबे लोकसभा से रिकमेंडेशन उडा को एक्सेप्ट करि पारे न करिबे ओके The chairman and deputy chairman of Rajya Sabha are not member of that house. While the nominated member of two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president.
both 2 only. Huh? 2 only. Only 2. Chairman and deputy chairman of Rajya Sabha are not the member of that house. देखो chairman सिना हमर chairman किए राज्य सभा रो vice president is not a member of Rajya Sabha. vice president एबे सीपी राधाकृष्णन हेई छंती इलेक्शन हेई छन से बाहर जने किया हले तो तांकू हमर वोट देले लोकसभा राज्यसभा ऑल मेंबर इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड मेंबर माने वोट देले सो जे चेयरमैन ही इज आउटसाइडर बट जे डेप्यूटी चेयरमैन सीए सेही राज्यसभा जो माने मेंबर थांती तांकर भितरु जने हुअंती सो जो चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन को होउची तो सेही दिरे डेप्यूटी चेयरमैन इज ए मेंबर ऑफ हाउस ओके बट चेयरमैन इज नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस सेकंड हला हमर नॉमिनेटेड मेंबर माने हमर भाग नियंती नाही प्रेसिडेंट को इलेक्शन मु प्रेसिडेंट आमे जतले पढुतले बे प्रेसिडेंट को इलेक्शन में किए भाग नियंती ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा राज्यसभा विधानसभा आउ विधानसभा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पांडिचेरी और दिल्ली एती माने नो नॉमिनेटेड मेंबर माने भाग नियंती कि लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद रा कोन मेंबर माने भाग नियंती नाही किंतु हमर बे जो वाइस प्रेसिडेंट कर इलेक्शन हेतला सेही थिरे हमर कोन ना बोथ नॉमिनेटेड मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर माने भाग नियंती सो सेकंड स्टेटमेंट हमर ठीक अछि एक क्वेश्चन हमर करो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट जो कमिटी दी तीनटा कमिटी रो क्वेश्चन पड़ गोटे एस्टिमेट कमिटी गोटे पब्लिक अकाउंट कमिटी प्रथमे 21 जन मेंबर अछन 25 जन नुह 21 जन सॉरी 22 जन 22 कोची 22 जन मेंबर अछन ते 22 रु 15 जन हेले हमर लोकसभा रो ओके आर 7 जन हमर हेले कोन ना राज्यसभा ओके 15 जन हेले लोकसभा रो 7 जन हेले राज्यसभा रो तो एटा हमर भूल अछि तो एकटा तमे काटी दियो ओके तीनटा तो देखिबा नै एटा ठीक अछि ओके बी scrutinize and appropriation and finance account of the government okay so kon habo B. okay so 2 and 3 eta scrutinize the appropriation and finance account of the government okay so 2 and 3 eta upon correct answer okay next regarding the office of the speaker of the lok sabha consider the following statement speaker को ऊपर हमरा क्वेश्चन पड़ितला को he hold the office during the pleasure of the president he or she need not be a member of the house at the time of your election but become a member of the house within 6 months if he intended to resign the letter of his resignation has to be addressed to deputy speaker 3 huh only 3 only 3 okay आंसर होची ओनली 3 देखो स्पीकर जदी हमर रेजिग्नेशन देबे काहा को देबे डेप्यूटी स्पीकर देबे स्पीकर को ओके ये कोन प्रेसिडेंट जतले चाहिबे को बाहर करि परिबे ना बाहर करि परिबे नै बाहर करिया कोले कोन हबो ना हमर लोकसभा रे स्पेशल मेजॉरिटी रे हमर पास होबा दरकार 14 डेज रे एडवांस नोटिस दबा हमर दरकार तेनु आउ जो कोहा होची जे जणे जदी लोकसभा रे मेंबर नुहे can he become a speaker of the lok sabha no जो माने हमर इलेक्टेड है कि जाई थांदी लोक सभा को तांकरी भितरु जणे हमर लोक सभा रे स्पीकर हिसाब रे हमर इलेक्टेड होंती he or she need not be a member of the house at the time of एटा भूल अछि he must be a member not me he need to be a member of the house at the time of our election okay तो ए जो 6 मंथ ए सब ये ने तो सीए हमर निहाती हाउस रे ओटे मेंबर हेतवा दरकार बुझि पालो ना बुझि पालो नी ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सो आंसर कोन हबो ओनली सी इज द करेक्ट आंसर द स्पीकर हमर को होची द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोक सभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर ओके तो प्रथम सिटिंग बसला पारे जो माने इलेक्टेड हे कि जाई थांती तांकर भितरु हमर जने मेंबर हिसाब रे इलेक्टेड होंती okay speaker remains office during the life of the lok sabha he has to vacate his office earlier को केस रे जदी लोक सभा रे मेंबरशिप पड़ेला जदी रेजिग्नेशन देबे रेजिग्नेशन का को देबे डेप्यूटी स्पीकर जोडा परीक्षा रे पड़ितला से रेजिग्नेशन देले डेप्यूटी स्पीकर को देबे नहल नै तांको रिमूव करा जाउची
a resolution passed by a majority of all member of the Lok Sabha and 14 days रा advance notice तांको दिया जाए। ओके तो एई केस रे हमरा कोन होची ना हमर स्पीकर बाहर परिबे। स्पीकर करो पावर रे हमें खाली मन रखि था मेंटेन द डिकोरम ऑफ द हाउस माने पूरा लोकसभा रे मीटिंग टाको सी ही हैंडल करंती। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया adjourn the house or suspend the meeting in absence of quorum। जदी quorum माने कोन कहिथिल तुमको मिनिमम नंबर दरकार मिनिमम नंबर केते 1/10 ऑफ लोकसभा। ओके लोकसभा रो जदी 543 माने केते ना मिनिमम 55 जन जदी नाहांती ताहाले हमरा कोन ना मीटिंग टा कैंसिल। ओके सो एंड हमें पढिथिले जॉइंट सिटिंग टाको प्रिसाइडेड करंती 108 रे जेतेबेले प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग राखिबे से जॉइंट सिटिंग टाको किए राखिबे जो प्रिसाइड करिवे हमरो स्पीकर करिवे। आउ गोटे हला कास्टिंग वोट एटा भी मन रखिथिबो। कास्टिंग वोट माने कोन ना गोटे बिल टा जदी इक्वली डिवाइडेड हे जिवो बिल ऑफ फॉर जति की अगेंस्ट रे सेति की ताहाले सेही केस रे स्पीकर जो गाडे वोट देबे सेही डायरेक्शन रे जिवो जोटा हम कहचे कास्टिंग वोट। तब प्रथम ये वोट दियंती स्पीकर डज नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस जदी से बसिबे यदि जो पटे मेजॉरिटी हे गला तो सही डिसीजन दे देबे तार गोटे बिल टा लोकसभा रे इक्वली डिवाइडेड हे गला ता फॉर जति की ता अगेंस्ट रे सेति की तो स्पीकर सही समय रे जो पटे वोट देबे सेही आडू को हमर डिसीजन ता जिवो सेटा को हमें कास्टिंग वोट करी। ओके तोडा मन रखियो। Which of the following special power has been conferred in the Rajya Sabha by the Constitution of India? कोउडा राज्य सभा रा स्पेशल पावर 2012 रे पडितला। ऑल इंडिया सर्विस जदी स्टेट लिस्ट ओडे हमरा लॉ करिवार अछि और टू क्रिएट वन मोर ऑल इंडिया सर्विस तो सेटा केवल से रेजोल्यूशन टा कोठी हमर पास हुआ दरकार राज्यसभा रे पास हुआ दरकार। सो आंसर कोन हबो बी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट तेनु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जदी करूचे तो सेही चैप्टर रो जोडा मेन कांसेप्ट तमे पार्लियामेंट चैप्टर रो एति की होची मेन कांसेप्ट 23 टा क्वेश्चन तमे करि दियो। ए 23 टा क्वेश्चन ने मेजॉरिटी जहां भी कांसेप्ट अछि 23 टा क्वेश्चन हमरो तमरो टोटल माने कांसेप्ट आई आर भितर ही होची। ओके तेनु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिबा निहाते दरकार। ओके सो हमें नेक्स्ट क्लास रे आउ सब गुडा को जो जोडा अच्छे हम पढिबा। सो आउ गुडे रहउची जो जो हमें मु सिलेक्टेड क्वेश्चन केतोडे करी छी जोडा की 1500 पाखा पाखी क्वेश्चन जोडा की आज हमें रिलीज करिवु। तो सेही धीरे जो गुडा का पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि पॉलिटी रो सपोज पाखा पाखी 250 ରୁ 300 क्वेश्चन ज्योग्राफी रो 200 क्वेश्चन हिस्ट्री रो 200 क्वेश्चन करंट अफेयर्स रो 400-500 क्वेश्चन से तक निहाती करिवो। जो माने 40 टा मॉक टेस्ट करिछ त करिछ आउ ए 1500 क्वेश्चन जोडा दिहाला तमे की रट्टा मारी के मन रखिबो माने आ भितरु से 4000 क्वेश्चन भितरु बछा बछा क्वेश्चन 1500 टा क्वेश्चन तुमको दिया जिवो सेटा यू मस्ट सेटा भल से पढी की जिवो जोटा की प्रीलिम पाई जदी सेति की भी करूछ त माने 80-90% माने कांसेप्ट आ क्वेश्चन क्लियर हे जिवो। ओके प्रीलिम क्लियर करिया पई तुमको ए 1500 क्वेश्चन पूरा भल से ध्यान से करी के जिवो। ओके सो आज हमें रिलीज करिवो राती जबो। ओके तो सेटा हमें दबो आज राती। ओके ठीक अछि थैंक यू। पीडीएफ दिया हबो कि ऐप रे आसीबो? ऐप रे आसीबो। अच्छा ठीक अछि ठीक अछि थैंक यू सर कोर्स रे थिबो तो सर ए पीडीएफ दिया हबो तुम केरे दिया जो रीड वन सर से दिन इकोनॉमिक्स रो पीडीएफ तो मिलेनी। हां हां कर देबे। थैंक यू सर।